So good afternoon, all of you. And today we are going to be solve few numerical on composite beam. In the last class, we had discussed on the concept of composite beam, and also we had solved few numericals on that. So today uh, we are going to be solve more numericals to understand the concept of the composite beam. And let us see the first numerical. I'm just narrate this numerical and let me discuss how to solve this numerical. So a fleece beam consists of two timber joists. This is the timber. There are two timber. Timber is you know already. Wide the dimension is given, and 350 is deep, means this dimension is also given, with a steel plate 250 deep. So this dimension of this steel is given. The hatch part is steel, and the thickness is like this, and fixed symmetrically between the timber. Symmetrically means the both side. If you take the center of this, so both side is equal. Calculate the moment of resistance of fleece beam if allowable stress in the timber is 7 Newton per square. Okay. Yes, sir. And this thing is given the relation between the Young modulus of wood and steel. Okay, so we can say, so the ratio of ES upon ET, we are also know that it is said to be a modular ratio, and we are representing modular ratio by small m here. Okay, so you can see the dimensions already given. This cross section of cross section of the beam, which is a composite beam. So we know we can draw a line between so this is called a neutral axis of that. Okay, this part. So the neutral axis is passing through the center of the section. So maximum stresses. So the maximum stress of 7 Newton per Okay, there is a correction. So 7 Newton per square will be at कहां पर होगा सबसे ज्यादा, एट द टॉप या यहाँ दोनों साइड में, टॉप साइड में ही होगा. ठीक है. So the maximum stress 7 Newton per square will be at the half of this 350. So how much it is? 750 from the NA means the neutral axis. So ये तो clear है, because we know that sigma upon y is equal to m upon I. So with this relation, we know that this sigma is depend on the y. Y is the distance from the neutral axis. So it is both are the proportional. Sigma is proportional to the y. So this is a very simple concept. So you already understood. So the moment of resistance we have to calculate of the composite beam or fleece beam. This must be T. So fleece beam at the moment of resistance, how we know that M is equal to moment of resistance and moment that bending moment, both are the same thing. So M is equal to sigma Z. We had discussion on that in the first lecture. So what is the value of sigma max? This is 7 for the wood. It is already given in the question for the timber or wood. So because this is a 2, one wood
is here, another is here. So you have to make double of this. So you multiplied by 2, and sigma y already given 7, and value of z. Z is the section modulus, and section modulus can be calculated. It is a ratio of the moment of inertia and the distance from the outer filament, or you can say the y max. Just put all the respective value. 2 times 7 is given, and how we can calculate the I, moment of inertia? It can be bd cube by 12. And how much is b? B is 150 and d is 350. So this, put the respective value, 150 into 350 cube by 12, and y max in case of it, so half of 350, so half of this, it would be 175 होगा. इसको सीधे सिंपली आपके पास कैलकुलेटर है, you use that calculator, solve this relation, you will get the moment of resistance in the timber 42.875 into 10 to the power 6 Newton mm, and you just convert this Newton mm into Newton meter. So this become 42.875 किलो न्यूटन मीटर. सो एक हमने निकाल लिया टिम्बर के लिए, अब स्टील के लिए निकाल के हम जस्ट इसको ऐड कर देंगे बस. सो हमारा हम वी विल गेट द डिजायर रिजल्ट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ठीक है. सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, आई एम जस्ट इरेजिंग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so now we have the moment of resistance for the timber. So because we know that sigma, देखो आपको पता है ना, sigma is proportional to the y. Okay, so ये वाला इसके proportional है, so it is depend on the y. ठीक है. So this is concept के use करके आप देखिए. So what we are going to be calculate the stress in the timber at 125 mm from the neutral axis, which is maximum for the steel. You can see this. ये देखिए हमने यहाँ पर निकाला, हमने यहाँ पर हमने कैलकुलेट के लिए वैल्यू ऑफ m, और स्ट्रेस हमको पता थी दैट इज सिग्मा ऑफ टिम्बर, सिग्मा टी, ये जो 7 वाला था. अब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर इस डिस्टेंस पे. कितनी डिस्टेंस पे? दैट हाफ ऑफ 250 का था 175. तो 175 mm डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि देखो यहाँ से कितना, 175 पे तो 7 है, तो व्हाट वुड बी एट 125 पे कितनी होगी? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगा के निकालना है. फिर हमको वी विल बी गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा टी एट द डिस्टेंस 125 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. सो एट वंस वी विल गेट दैट, देन वी विल ट्रांसफर टू द फॉर द स्टील के लिए हम उसको ट्रांसफर कर देते. चलिए अब इसको देखते हैं. So we are using the same concept, we are knowing. So the 7 कितने पे है? 7 न्यूटन पर mm जो वैल्यू ऑफ सिग्मा है, सिग्मा टी, वो है कितने पे? न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस 175 पे. ठीक है. तो 125 पे कितना होगा? ये उड की बात कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट उड ओनली. सो इट वुड बी, ये हो जाएगा 175 अपॉन 125 इंटू 7. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे, सो ये बन जाएगा कितना? 5. ठीक है, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो नाउ we are know that the value of stress on the timber at a distance 125 from the neutral axis is a 5 Newton per mm square.
So we know that. So यहाँ the moment of resistance of steel, कैलकुलेट करते हैं. It is sigma ये. अच्छा, इससे पहले one more thing we have to discuss. So ये देखिए, so अब ये हमने निकाला 5 in the timber at distance 125. Then what would be the value of value of the stress at a distance 175 in the steel? The maximum stress in the steel में. सो जब स्टील में आप करोगे, सो ये जो आपका ये जो वैल्यू है कौन सी, मॉड्यूलर रेशियो. सो मॉड्यूलर रेशियो की अगर आप इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमको उसी डिस्टेंस पर वुड के लिए मिला है, सो वी विल गेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्टील. और वो वैल्यू है, देखो ये कितनी, ये हो जाएगी 20 into 5 and it will be 100 न्यूटन पर mm². ठीक है. मॉडुलर रेशियो तुमको कहाँ से मिला था? मॉडुलर रेशियो मिलता है रेशियो ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ वीक वन. सो उसका जो रेशियो होता है वो मॉडुलर रेशियो होता है. और यहाँ स्टील, सो वंस वी नो दैट एट द सेम डिस्टेंस पे, उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमको वुड पे पता है, सो हम वुड इज द बीक का है, बीक वाला है, वुड इज द बीकर देन स्टील. सो वुड का पता है, वुड में वंस वी मल्टीप्लाई बाय द मॉड्यूलर रेशियो, सो वी विल गेट द स्ट्रेस इन द स्टील. ठीक है, हम निकाल लेंगे. ये देखो यहाँ से आया, ये आया 100 न्यूटन पर. सो अब हमको ये सिग्मा मैक्स पता चल गया, जेड हम निकाल लेंगे. सो देखिए जरा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इन द स्टील 100 निकाला. आई क्या होता है, वो सेक्शन है BD क्यूब by 12. सेम फॉर्मूला वी आर यूजिंग. सो B is 15 and D is 250. 250 का क्यूब by 12 अपान कितना, 125 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना. ये देखो 125 तो 125. अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिला 15.625 किलो न्यूटन मीटर. इसका इंडिविजुअल स्टील के लिए निकाला, इंडिविजुअल वुड के लिए निकाला था अभी. ठीक है, इससे पहले उस साइड है, उन दोनों को आपस में ऐड कर दो. सो वी विल बी गेट द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वियर्ड बाय द क्रॉस सेक्शन. सो हमको यही कैलकुलेट करना था इस केस में. सो दिस इज ऑल अबाउट this numerical, and let's discuss next one. So first I would like to be erase my screen and then we move to the next slide. So let's see. So this numerical is some little bit different, so try to understand. So I'm just reading out this numerical and try to understand. A beam consists of a wooden joist, wooden वाला, बीच वाला wooden का है. Dimension is given in the centimeter in the question, and I written in the diagram in mm, for because we will be calculating the mm, so I am not directly written like this. So 12 centimeter wide and 20 centimeter deep, strengthened by a steel plate 1 centimeter में 10 mm thick and 18 centimeter means 180 mm deep, one on the either side of joint. either side में दोनों side हो गया ना. if the stresses in the wood and steel are not exceed 8 mega newton means megapascal. okay, and ये वुड में 8 है, स्टील में है 128 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर्स मेगा पास्कल. सो फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमको m की वैल्यू निकालनी है. एंड टेक द मोमेंट ऑफ टेक द मोमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल टू द
20 times of the wood. So directly the modular ratio is given. So what question said, I'm just writing in the numerical form. So this is in form, you can see. So ES is equal to 20 EW for wood. This is, so once this come here, so it's become 20. So we can say the modular ratio is the 20 in this case. So this is given in the question. वो question में दिया है, और everything is mentioned in this diagram. So what we are doing, we are going to be solve this numerical with the different approach, and there we know the sigma value for the respective material, but we are going to be solve the moment of inertia I value in once first we convert this part the equivalent to the steel. Whole section will convert in the equivalent to the steel. What is the method? That is the simple method. The thickness of steel equivalent to the wood. The steel, this will be going to be convert. This is wood, and we are going to be convert in form of steel. So whole system will convert in the steel. So if this thing happens, so what we are doing, this dimension, ये dimension किसका है? wood का. So जब कभी आपके पास beak का dimension है, wood is weaker one, beak than steel. So जब कभी किसी weak dimension को स्ट्रॉन्ग के डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो आप मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करो. ये आप चाहे तो लिख लो, ये हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको यूज कर सकते हो. हियर जब वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रॉन्ग के सेम डायमेंशंस को, तो उसमें आप जो भी मॉडुलर रेशियो उससे डिवाइड कर दो. और दूसरा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग का डायमेंशन है, स्ट्रॉन्ग को वीक में कन्वर्ट करना है, तो उसमें मॉडुलर रेशियो को मल्टीप्लाई कर. ठीक है, तो यहाँ हमने जो कि ये वुड बीक है उसका डायमेंशन 120 और इक्विवेलेंट स्टील बनाना है, तो इसमें हम 120 को डिवाइड कर देंगे, 120 में मॉडुलर रेशियो को डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 6 mm. तो अब ये जो 120 था वो अब नया बीम में ये 6 mm का हो जाएगा. तो होल स्ट्रक्चर विल बिकम, दिस पार्ट बिकम इक्विवेलेंट टू स्टील. इट इज नॉट ए स्टील बट इट इज इक्विवेलेंट टू द स्टील. अब जब इक्विवेलेंट टू स्टील बन जाएगा, सो हमको उसको सॉल्यूशन या सॉल्व करना क्वाइट सिंपल हो. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा, आप देखो. सो ये है इक्विवेलेंट स्टील का सेक्शन, आजू बाजू स्टील और बीच वाला इक्विवेलेंट हो गया. तो इस टोटल ये अब एक ही मटेरियल का मान. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मूवमेंट, इसका निकालेंगे स्टील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. जो ये सेक्शन बन गया है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का बहुत सिंपल तरीका अपन ने पढ़ा ही था. ये सब रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल दिख रहा है, तो क्या होता है, BD क्यूब बाई 12, वही फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, सो BD क्यूब, वी हैव टू स्टील, वुड के पार्ट दो है हमारे पास, ये वाला. सो वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन. सो न्यूट्रल एक्सिस पासिंग विद दिस डायमेंशन, जो बड़ा वाला है उससे पास हो रहा है. सो वी कैन से 2 into 10 is this, and 180, this is 180 का क्यूब by 12, and similarly this part is 6 and this is 200. So 6 into 200 cube by 12, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे. So we will be get the value of the I of this equivalent system. इस इक्विवेलेंट सिस्टम का I मिल गया. जैसे ही आपको इक्विवेलेंट सिस्टम को आपको I मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अब देखो इस इक्विवेलेंट I को लेके we are going to be solve, we will be get
the value of moment of resistance of both cases. Both one case क्या है, when the sigma of we consider the sigma of steel and then next we will consider the sigma of wood. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. तो sigma of steel is 128 मेगा न्यूटन और इसको कन्वर्ट किया so it's become न्यूटन पर mm स्क्वायर. So m is equal to sigma si upon sigma y. ये भाई किसका है, ये स्टील का है, ये इक्विवेलेंट टू स्टील पार्ट. जैसे ही है वैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. आओ इस ये गिवन है 128, देन आई अब ये कैलकुलेट किया तुमने, उसको एज इट इज रख लिया. अब किसकी बारी, ये किसका लिया है तुमने, स्टील का. सो स्टील एक्चुअल में तो ये वाला है, ये तो उडी है लेकिन स्टील में कन्वर्ट किया है. तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितनी होगी, 90. सो ये इसका 180 का हाफ 90, यहाँ डिवाइड कर दिया. जो भी हमको m की वैल्यू आई यहाँ, दैट इज 19.5 × 10⁶ न्यूटन mm, इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो इट्स बिकम 19.51 किलो न्यूटन मीटर. कैलकुलेट कर लिया. तो ये एक सोल्यूशन हो गया, ये एक सोल्यूशन हो गया जो मांग रहा था वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. बट वी हैव दिस स्मॉल w आल्सो, सॉरी द सिग्मा फॉर वुड आल्सो. सो इसको लेकर भी हम चेक करेंगे. और इसमें जिस केस में वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को वियर करे, क्योंकि कोई भी मटेरियल जितने बेंडिंग मोमेंट को वियर करेगा ना वो उतना सेफ डिजाइन है. जिस केस में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो तुम्हारा अपना आंसर होगा. सो लेट्स टेक द W, ये सिग्मा W 8 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर ये ले लिया. अब देखो बेटा, अब क्या करते हैं, वी हैव दिस फॉर्मूला सिग्मा. अब डायरेक्ट हम लगा रहे हैं सिग्मा W इज इक्वल टू, ये तो हमको पता है m इंटू जेड होता है. तो जेड को हमने सो ये होता है सिग्मा, नहीं m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड होता है. तो इसको यहाँ देखो, इस वाले से यहाँ से समझ सकते हो. तो हमको इन टर्म ऑफ सिग्मा लिख दिया. तो ये देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई इसके नीचे चला जाएगा, वही हुआ यहाँ, ये देखो. ठीक है, तो इंटू ये हो जाएगा, ये उड के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये उड ये बीच वाले के लिए, अपॉन आई ये हो गया. सो ये हो गया सिग्मा फॉर द वुड के लिए. और इस वुड को स्टील में कन्वर्ट कर, तो वुड क्या है, बीक वाला, बीक डायमेंशन. अब ये सिग्मा है, तो हम क्या करते हैं, इस सिग्मा में हम इसमें हम डिवाइड कर दें किसको, 120 को, सॉरी 120 नहीं 20 को, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द किसमें, इक्विवेलेंट टू द स्टील डायमेंशन. ठीक है, फॉर्मूला किसका लिखा, वुड का. स्टील के ये सिग्मा से डिवाइड कर दिया, सिग्मा नहीं एम से डिवाइड कर दिया. तो अब ये बन गया स्टील, ये इसका डायमेंशन बन गया. ठीक है, सो अब वैल्यू रख देते हैं एम की वैल्यू, सॉरी एम तो निकालना है, सॉरी वी हैव द 8, एम तो निकालना है. ये हम निकाल लेंगे किसका, यहाँ से 200 का 200 का हाफ 100, आई वैल्यू यही जो पहले निकाला था हमने यहाँ पास, वो डायरेक्ट रख दिया 120. अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू ऑफ m मिला, सो दैट इज व्हेन वी कंसीडरिंग द सिग्मा वैल्यू ऑफ वुड मैक्सिमम परमिसिबल इज 8 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर. उस केस में टोटल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो आई या बेंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई, that is a 21.95 into 10⁶ न्यूटन mm. ये है, तो इसमें से जो भी ज्यादा है ये, और इनमें से ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो इसमें इस तरह के प्रॉब्लम आपने कल लास्ट क्लास में भी है डिस्कस कि सिंपल वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. फिर 2 केस आज डिस्कस किया, दोनों को 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व किया. जैसे आज की प्रॉब्लम में there is a 2 permissible values given, so we have to be check for the both, दोनों कंसीडर करके we have to be solve this. So this is a simple method.
Hope you are understood, and thank you so much for attending this